Sir was served as the Director General of Police for Odisha State 2008 to 12. Then sir also work in various capacity like Director of Intelligence for Odisha. Then UPSC board member also. So those who are qualifying for the UPSC in the panel, sir already taken so many interview in the UPSC board as a board member. And also sir also got the President Medal for Distinguished Service in 2001. And sir completed the master from Ravenshaw University in history. So thank you so much, sir, to keeping our request to take a session, and particularly NAXALISM is a major issue in Odisha, where the government of Odisha is trying to bring the Naxal movement to zero by 2036. So sir will have the practical knowledge about this, as sir already work on this field. So we'll learn from sir's experience. So welcome to Kalinga, sir. So thank you so much for coming. Sir, I hope all of you are from Odisha, isn't it? All of you are familiar with Odia. So while speaking, since most of you, as I can find out from Shroud Raya, will be writing in English. We are choosing to write in English. So most of my speech will be in English, but at some places where it will be easier to convey the, the whatever I want to say in Odia, I will use Odia. Please bear with me, okay? So now today our topic is, what was given to me is left-wing extremism, or which is popularly known as Naxal violence or Naxalite activities. Should I stand up and speak? Sitting here will do. Beg your pardon? Which one? Okay. So I can stand up and speak, provided this. Yes. Friends, any of you are from Koraput district? Any of you here? No. Kandhamal district? Rayagada, Gazpur, any of you? Mayurbhanj? Acha. You're from Mayurbhanj. So, Adivasi? Yes. No Santali language, I suppose? I see. Right. That would do for the time being. I hope some people from Koraput are listening to understand some aspects of left-wing extremism in Odisha. Now the point is, left-wing extremism arose out of spread of Maoist ideologies. Before that, it is a part and parcel of Marxism. All of you, I suppose, have basic idea of Marxist ideology, how it developed, Russian Revolution, Chinese Revolution, spread all over the world, fighting in Korea, in Vietnam. These basic things of general knowledge, I think most of you are aware of it. In India, if I go into details, it will take a lot of time. So what I'm suggesting that even in pre-independence days, India had a strong Naxalite movement. Some like Manavendranath Roy, etc. Even during and after the Russian Revolution, they were, because communism is held to be a worldwide movement. They say that they believe in the concept of class struggle, the working class and the exploiter classes. So the
they have a worldwide organization. Some of our Indians, even in those days, 1917 to 20 or thereafter, they were a part of the International Communist Organization, their theory, etc. International Communist Organizations. Even during the Second World War, many of our communists joined them. In Odisha also, in those periods, if you have heard of Bhagavati Charan Pranigrahi, they were organizing working class activities and giving fillip to the Marxist ideology. After independence, in the 60s, the Russia and China fell apart. You know, if you study Russian Revolution, it arose out of urban areas where there was a big working class proletariat, working class laborers, or after First World War or during First World War, large number of soldiers were also retrenched from the army. A combination of them grabbed the power from the kingship in Russia, which became Soviet Union. You understand my point? But in China, it was a agrarian, more agrarian-based revolution. China, large parts of it were under the government of Sun Yat-sen, etc., and parts were under Japanese occupation. So the Maoist revolution in China, rural areas, the portions of rural areas they occupied, which in Marxist ideology are called dominoes, gradually say merged and occupied the state power. In India, immediately after the independence in the 60s, some people said the Chinese model is more suitable to us because the CPI, Communist Party of India by that time, they were following the Soviet-backed communism. So this party got separated, CPI and CPM. Till now they are separated. CPI and CPI Marxist are separated. Thereafter what happened was that the more assertive elements, those who are looking for a proletariat revolution, particularly in Bengal, some of them were quite keen to have because the CPI aim is more agrarian-based revolution, as I pointed out, Soviet Union and China, rather than the industrial-based revolution, because according to them, at that time, Indian proletariat situation is not that high, but there is a huge laboring working class engaged in agriculture. That is their ideology. So, this Naxalite violence took place, as you might have read in the materials given to me, have a look at it, at a village called Naxalbari in plain area of Siliguri district. People like Charu Majumdar, Kanu Sanel, Jangal Santal, these people, they murdered a Jotdar. Jotdar means landowner who, according to them, was demanding higher price. So these more adventurous elements among the CPM or having support to the CPM did all this. Gradually, obviously, CPM, which was in power or trying for power, rather trying for power, many of them were not willing because many of them were MLAs or associated with government. They did not want what they felt to be reckless violence. So then they separated from them. And if my memory serves me right, in 69, formed the CPI ML. ML means Marxist Leninist. One was CPI, this is CPM fractured. Now it is CPI ML. They call themselves CPI ML. I will not go into details. They also press thereafter they divided into MCC, MTC, etc. various groups. I am not going into it. But by state action against their violent activities, many of them were arrested and jailed. In Odisha, their impact was felt in both, to an extent, south as well as north. Leaders those days in Odisha, those who came out,
are Nagbhushan Patnaik, in DBM Patnaik or D. Bhubaneswar Patnaik, all are from Gunpur. Gananath Patra, native of Baleswar district, if I remember my thoughts in right. Some people in the northern parts of Mayurbhanj, those who are more or less influenced by their adjoining areas of West Singhbhum, were quite strong by this ML activities were there. But that was crushed or brought under control by 71 when Bangladesh war was taking place. On account of that, there was an emergency. Whatever was left out, by 75, all of them were jailed. Are you getting a point on in Odisha at least? All of them were in jail. Thereafter, most of them were also many, Nagbhushan, for instance, was given a death sentence. But by surrendering to the government or saying that we will not indulge in violent activities, they were all pardoned their crimes. You will do this, not do this, that. They were released from jail after, by 80s, mid 80s, they were released from jail. Many of the die-hard Maoist violent, violence, those who are trying to overthrow the constitutionally established government by classless communist government, they felt that perhaps their weakness in arms or a proper arms struggle, they could not make any headway in the 70s. So again, by 80s, they started reviving. This time, the revival came from Andhra Pradesh. For instance, I'll tell you, there is a communist movement, guerrilla type communist movement in Andhra Pradesh. Even predating Naxalbari, there was a struggle to start with against Nizam's regime. It continued after Nizam's regime was merged in India. And even at that time, our OMP that time went there for some times to fight against them. So they had a story of, this kind of violent movements, and which was given a Maoist stamp, communist stamp during those times. That will why these are so. I will come to as my understanding goes a little later. So this was led. I told you about Andhra, again revived in 80-81. Up to that point, I had come. So there, the leadership was taken by one Mr. Nagireddy. Are you getting a point? In the meantime, in Odisha, one Mr. Sethi is still here. I met him now and then, etc. They formed a group called CPI-ML Liberation. This was also backed by Manmohan Praharaj and Nagbhushan Patnaik. I am putting a little emphasis in Odisha because you are appearing for Odisha, this organization. If you want to talk about all India thing, this history I'll put a little more emphasis in Odisha. When cause, etc., it will be general phenomenon. So they formed a CPI-ML, which they call Liberation, which is still there. What was their objective? To some extent, it is still there. To wreck the democratic system from within. So their ideology was that they will contest in elections, hold demonstrations, etc., for their popular causes. And once they come to power, they will do away with the constitution and establish a working class dictatorship. Or that is what is their, broadly their idea. So to start with, what Sethi, I am forgetting his name here, I know him too well. The secretary was one Sabyasachi Panda of Ranpur. Okay. So these people and some of their supporters started, networking with Nagireddy. Nagireddy with, who was there, Andhra, Kalinga, then Andhra Pradesh. They are, what I told you earlier, more adventurist, communist class struggle type leaders, they networking with them. Whereas these people remained with their ideology, Sabyasachi joined them, networked with those people. There what happened? The more militants among the Nagireddy faction
they parted company from Nagi Reddy and formed what is known as People's War Group, purely a military organization. So they started from the People's War Group. Subsequently, they mixed with another government called PW, another faction, and call it CPI, ML, PW for many years, till about, I think, 2000 something, when they styled themselves as CPI Maoist. Now you have got a rule, now violence profile. Violence profile in Andhra, it started with the formation of PWZ in mid-80s. They started attacking police stations, snatching away weapons. With those weapons, they started all this. In Odisha, during the previous Naxalite period up to 75, I told you when they were wiped out. In the 60s and 70s, to face these challenges, they had formed in our southern border areas at various places what is known as anti-Naxalite picket posts, about 2 sections or someplace less or more. About 20 people, we can say, with their leadership of armed police posts, and also some some civil intelligence units at various places. But by what happened by mid-80s, they had become not very effective and totally ineffective, let me tell you. Reason being, there is no supervision over them. Since the Naxalite violence was no more there, so this was never analyzed in any before that in the first place in Odisha. It was never taken seriously. When it came up, thereafter, by late 80s, we have started feeling this thing of 80s or 90s. It is absolutely clear that we are into difficulty. 92, 93, it is very clear that we are in difficulties. So now, the feeling those days among the, these may be controversial, but you should understand this. The Orissa security establishment doesn't have the capacity to deal with this problem the way it was coming in. And if you decide today, our government and bureaucratic system, the moment you get the money, you get the sanctions, you train people, make them motivated enough for this kind of things, it takes 7-8 years. As an experienced person, believe in it the way our bureaucratic system operates. I will stop here. Then my next talk, I will start about what was done in Orissa or India to tackle this problem in the present phase. This is a background. Any questions so far by anybody? No. Why Maoism? This is a question sometimes it is asked, and why Maoism and what can be done or what should be done to deal with it? Why Maoism? I will give you 4 to 5 points. One is the governance issues. Now, certain parts of Orissa or India for that matter are absolutely at outlying places. Parts of, you can say, Malkangiri district, Raigada district, Mayurbhanj districts, even this Bani, Sundargarh, that Keonjhar, that Tri-Junction area. They're at one corner of Orissa. The road communications are poor. Governance, those who are posted, nothing properly to supervise. So these areas, large section of the public or totally are the Adivasi people. Are you getting my point or not? So in those areas, Adivasi, to the extent they can utilize governmental mechanisms, is rather poor. Even by the time Constitution was made, even before that British time, this was realized. So there was a 5th schedule of the Constitution which has been prescribed for them. 5th schedule, even before 35 Government of India Act, I don't remember what was
in what it was called then, in some form it is there. Like in parts of Northeast, some of the states. Like in, for instance, in Pakistan, there is Northwest Frontier Province, or it is called Khyber Pakhtunkhwa right now, or some other parts of India, which are tribal in outlying areas. They were outside the normal administration. And the Governor General or Governor, even those areas, even now in Odisha, Governor has a special power in those areas to see that the administration is properly done, and that he will do without the advice of the ministers. Whatever governor does according to constitution is as per the advice of the council of ministers. But in those areas, he has to himself see that the justice is done or given to the public. Fifth schedule. Under the fifth schedule, I think it is in, please check up the date, 2002 or something a little before that, PESA Act has been passed to give effect to the constitutional fifth schedule provisions. What is PESA's full form? What is that? If somebody remembers. Scheduled areas, what? Panchayat extension to scheduled areas. So there, 1998 or KB? 90? 92? 6. Achha, but by the time it is given effect to, when an act passed by the parliament, it is given effect to when the state government notifies it and say that these are the acts and these are the rules they are under to function. By the time it was, if my memory serves me right, at the time it was implemented in Odisha, it was 2000 or 2002, something like that, when it was implemented in Odisha. What does that act provides? That all the base level elected posts even thereafter, they have to be all filled up by persons belonging to the scheduled tribe. Are you getting my point or not? Like Sarpanch, ward member, etc., etc., etc. So that they can take care of their areas, requirements of the public. But despite all this, I am a person, I have seen this. I have 10 years involved in all this. So I have seen it. There is a feeling that this is not happening one way or other. The reasons can be, many of the schemes are made in Delhi or in Bhubaneswar. And through a bureaucracy, it is controlled. These people, these poor Adivasi, or even many of them are women, have very little understanding of how to get a thing done with the bureaucracy rules, etc. So they are totally guided by whoever is their bureaucratic, this kind of things. So sometimes the results are, many things are promised. The results are not forthcoming. I am talking about governance issues. Then other thing is, for instance, suppose a project is to come there. There has to be a village committee to sit down and this and that. In many instances, these village committees, by somehow or other, by various methods, which are not conducive towards the objectives for which this act or rules framed and are made, somehow they get past land acquisition, taking away this or that. So these are the issues. So there is a continuously feeling among many of the Adivasi community, including many senior MLAs and MPs, that it is very difficult to get things done. So there is what I am saying is, there is a governance deficit. Though the government is doing this thing, because of their implementation in a particular way, there are governance deficits. Simple example I will give you. A road is constructed in coastal area, anywhere in coastal area. Many of you must be from coastal area. I am one. So you see, very bad, you can say, corruption, this, that. But something is there. But if you go to Koraput, there is a KBK project, so much money, 3-4 kilometers inside, there is, virtually the implementation is very, very poor, in comparison to what it is here. Even if they are elected, this kind of problems is there. I remember around, which year was that? Around 2002, I was looking after anti-Naxalite kind of activities. In Rayagada, I was sitting there. So they make frontal organizations, the Maoists.
There it is called Chasi Mulia Samiti, Kui Lavenga Sangha, etc., etc., and the like. So they are holding a demonstration with ladies. Some of these ladies, they are very trained, they are speaking very well. We want this, we want that, etc., etc. So the government has done so many things for Adivasis, ladies, PESA Act, free education, free this, free that, schools, etc. So one of them, I asked that government has done so many things for you. Now tell me, what more do you want? So the answer is, this is laughable, but they told me, I said that you are elected as board member to MLA, somebody becomes a minister, so what more do you want? What power you want? They told me that you give us, that means I am a government servant, you give us the forest ranger, the RI, the Thana Babu posts you hand over to us, you go and become ministers. You know, so there is a kind of, please don't laugh, there is a mismatch you can see. I mean, this is not the feeling in coastal area. But are you getting a point? There is a mismatch of governance. So you can think about it. I thought those who are from our Adivasi areas can make out what is going on there. Many things like this which we have to develop. One is governance issues. Then developmental issues. Many of this has been tackled in the meantime. You know, I am telling you, I was carefully observing it from 1999 to 2008. Thereafter, I was in general, I told you I was DGP for only a part of my job, or not others looking into it, but I have seen what is going on. Things have improved in the meantime. This is little dated. Since causes we are analyzing, I am telling you this. The second point is, what I told you is the governance related issues, development related issues. You know, the distances are large. Say, Government of India, under various schemes, I will come to them little later, says that roads will be constructed. So because of the large distances, so much road cannot be constructed there. So more money has to be pumped in for construction of mileages there, comparing to area that is there, and it took a lot of time. Urban facilities are just not there. So they become dependent on particularly the southern belt. I'll give you one example, for instance. You can understand. We are all Orias. I think all of you are of Odia people like me. We want Odisha, Odia culture, etc. to be, all of us want. In southern Odisha, for instance, take for instance Koraput. I, as a person from, I'm a man of Pata. So we feel that Sade Sabudin Sachi, Koraput, I'm Bhavuso Barampur, Pakhajamti Barampur Odegonta Rasta, but Koraput is 10 hours away. Are you getting a point or not? They entirely depend on Vizag or Vijayanagaram for their medical, for their college, for their education and everything. And that area of Andhra Pradesh was totally, you know, dominated by violent PWG kind of elements. So we like it or not, so that has to be affected. So my feeling is that that area has to be, but a big town like Barampur, Sambalpur, something a Odia urban place. This my feeling was not there. Several other issues like developmental issues. It is obviously backward. KBK project, etc. Why it was formed? Because they're extremely backward places. That provides an opportunity to Maoists from our neighboring states to develop this. Difficult areas. Those areas are hills, rivers, etc., which are difficult areas. So, take for instance agriculture. People say that land somebody has taken away. I don't believe in this because I have seen the field. Those areas, it is very difficult to do rice cultivation, agriculture as we do in our sites. So they are the Zoom type cultivation. Even if you use best of methods, we find it extremely difficult here. So whatever measures is there, it is becoming very difficult. So development of education. I am telling you,
Education, for instance, a lot of schools have taken place here. We have our own problems with our school education. Many of you might have read what is our education happening. The difference between somebody studying in the, I was myself a student from Odia school, but now, right now, I can see the possibility or the quality of a person who has been studying in, for instance, DAV school or similar other school, and between Odia school and village, the gap is too high. Most of you agree with this, or in my time it was not so. Even I was studying in Ravenshaw College. So in first year degree, people came from Stuart this or that school. Where we bothered that they can beat us, even in English, we can do better. The teachers who taught us grammar or composition, etc., they're quite good. So that gap, you imagine in Adivasis, those areas, whatever the schools, whatever they are, this thing, then another problem. Please understand. Say Malkangiri, like you go to, there is a in Naxalite affected, in my time it was at least called Vizangivada. In Vizangivada, the Adivasis are Koya or Koya Kondadora combination Adivasis. Their language is different, right? Their language is something else. The Bajar language is Telugu there. School language is Odia. Are you getting a point on that? So the school dropout is very high. After 3-4 class, many of them drop out. You ask them why you are dropping out. They said that what is the purpose? I mean, he can do some work or here and there, some kind of living help. What is the purpose of studying this language? So, what is the solution? Like this type of issues are there. So these are what I told you. One is the governance related issues. This is in the process of development. What are the problems we are facing? There is another thing is ethnicity, which is very important. Now, anyway, I don't know if you have seen, you know the difference between a caste and tribe? If you do not know, I will tell you. A caste is a part of total Hinduized system. A tribe is outside it. You go to even here, to Dhenkanal or parts of Keonjhar, I have seen. In Odia villages, scheduled castes are in the same community, but Adivasis will be staying a little away, if you have noticed this thing. Now, their language and culture, etc., it's different from our our general Odia speaking people. So they have a particular identity, right? So in the process of development, they feel a loss of identity. You know, a daughter is from I'm giving you the story. If your friends cannot understand, you please explain it to them. A colleague of mine in Bhubaneswar, a senior government official, his son was studying, a good student. He invited me to his house one day for a meal. I wanted a meal. My friend started his life as a native Santali speaker. So his mother is a native Santali speakers, and they are native Santali speakers. But their son, who is doing extremely well, I don't think he speaks Santali that well. I think developing in Bhubaneswar is more Odia side of person. So I said that Mausi, apang nati to bahut bhalo kala, ye kala, se kala. Actually, he should be happy. So, ha, bata kala, kintu diku he gala. You understand what I am speaking? There is a feeling that Santali identity he is losing. Are you getting a point or not? Similarly, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ funny historical ideas, anthropology ଇଏର ଏତେ strong ନାହିଁ. In fact, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ Naxalism ଏତେ ଇଏ ହେଇନି. Reason being, we are very close to our Adivasis ethnically. Reason being, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ନାଁ. ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଇଟା?
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ତା ମାନେ କ'ଣ ଝିଅ କହିଲୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ୟୁ ଏକାଠି ହୁଏ ଚାଲ ଏକାଠି ହୁଅ ନା ନାହିଁ ମତେ କହିଲେ ଏଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଦିନାଗ ଋଷି ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ମଚ୍ ମୋର ହେଇକିରି ଆମେ ଆରିଆନ ଅମୁକ ସମୁକ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ନା ଏଠି ବାରଙ୍ଗ ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଏଠି ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ହବ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁର ନାମ ଏଠି ହଉଛି ଦିଟା ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରୁପ ଟିକେ ହଁ ଦିଟା ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରୁପରୁ ଓଡ଼ିଆ मेन ओडिया एथनिसिटी हैज इमर्ज गोटा है ऑस्ट्रो एशियाटिक गोटा है द्राविडियन ऑस्ट्रो एशियाटिक है किए सांताल मुंडा जुआंग एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप कहते ऑस्ट्रो एशियाटिक द्राविडियन है गंड कंध कोया दक्षिण ओडिशा रे ऑस्ट्रो एशियाटिक है सौरा मीन सौरा बंडा एगुड़ा ऑस्ट्रो एशियाटिक किंतु कंध गंड एगुड़ा है द्राविडियन है all of us has emerged out of these two adivasi groups ଆମ ଗାଁ ଫା ନା ସେଠି କ'ଣ କି କାହାକୁ ତଡ଼ିକି ଆସିତା ତ ନୁହେଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ in the process of evolution we have reached this stage ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ତୁମେ I'm using ଓଡ଼ିଆ ର feeling kind of it generated which has to go over a period of time but I have seen during last 10-20 years it is vanishing very fast reason being most of the Adivasi boys are now Odia speaking, which by 1999-90 below seven nothile. Na kon koch am I right or wrong? So gradually that is coming up more or less. So another 10-20 years, it will be stabilized according to. Mane muja bhabi parchi. Apna mane you can also think in this. Say for instance, I will tell you another aspect also. जिथे आमर देवी देवता सब थिले गाँव रे अधिकांश ऑफ आदिवासी ओरिजिन मो निज गाँ कथा कटक रु 10 किलोमीटर दूर कटक टाउन रो आम गाँव जो देवी थिले ये कड़े ना हूँ आम कहूँ कौन कहूँ से फर किसी दूर रे जड़े गोटे देवी ता ना हूँ दुला देई सेटा कौन पार्वती ना को संस्कृताई देवता लोकल आदिवासी कल्चर ही हैज गोटे आम गाँव जो घर उठू से जाए दूर जन थे ताका ना हूँ संखेई एबे तांको संस्कृताइज करी संखेश्वरी तांको ना मु देखुची मो आखी आगे रे दुलाई देई को सेमती पार्वती कोन को द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन गोज ऑन एंड ऑन ऑल द टाइम्स सो एकड़े एगुडा सो न बुझिले रु हमर आदिवासी रूट्स एटसेट्रा अब सेकड़े यू नो थिंकिंग दैट दे आर डिफरेंट से जो द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन जोटा चलीथला यू नो ओडियनाइजेशन आई कैन कॉल इट दैट गॉट अ लिटिल स्टॉल बिकॉज ऑफ caste ये group मान करिए but gradually it is reviving another some years I think it will be okay I mean मो आखियागे मु देखुची विभिन्न you can see so there is a ethnicity so this ethnicity is very understand ए जो divide अछि ताको advantage नउसंती ए जो groups those who want to dislocate and create this thing another ethnic issue मु कोची आपन क्लियर बुझिबा को look I am not using words or etc from books I am just explaining it to you so that you understand Kondhamale re Sabyasachi along with some other Sandro yero si kon kole na sethi ethnic divide ta kon hoji dekhantu Kondha au gota kode pano more assessment hoji tangu dekhikri pano was originally a Austro-Asiatic Adivasi group which has been Orianized are you getting a point or not in the coastal area whereas Kondha is a Dravidian group आपण Dravidian और Austro-Asiatic भितरे language difference आपण ठीक मजा लागि होता टिके पचरा पचरी कले जानि परिबे it is very easy say for instance Austro-Asiatic सबु भाषा रे ये जीवा बुझी परिबे पानी होची दा ना नाही मते कहले मो गां पाकर गां अछि बारदा बार माने होची दुई दा माने होची पानी चित्तपड़ा महानदी रे पड़िची एटा केम सेट तो के देखा नथले कहार सेठी की देला से ना को आर यू गेटिंग ए पॉइंट ऑन सम एंसेस्टर लॉन्ग वे जो माने आस्ते आस्ते इवॉल्वड इनटू मेन स्ट्रीम ओडिया एंड दैट काइंड ऑफ थिंग एठी गोटे गां अछि किछि दूर रे गिरिंगा फुट बोली भुवनेश्वर कड़े जदी दो जो नो भुवनेश्वर सेटा प्योर कंध ना सेट तो कंधंकर देखा ना ये लिखी से गां को ना देला आर यू गेटिंग सो दे हैव इवॉल्वड इनटू ओडियनेस सो फार सेठी देयर इज एथनिक डिवाइड इन कंधमाल between this Pano and Kandha
that has been exacerbated by the Christian Hindu dispute over a period of time. ताकू ए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट माने बढ़िया जगह गोटे करिया पे कि गंडोल करिकी से लक्ष्मणानंद सरस्वती के ग्रुप केम एंड they killed him, and what happened thereafter, you know what sort of violence and that kind of thing. So ethnicity is a very important factor, but as you realize, lot of steps are being taken in Odisha at least to bring about a sort of get it sorted out and that kind of thing. तापर science and technology. लोकंकर गोटे धारणा जे पुलिस हाथ में बहुत पावर अच्छे जो बंधुकटा धरचंती जी देखिले डरिकी नक्सलाइट फक्सलाइट करिकी पळेबे सेटा या पूर्व फेज रे थाई पारे जेतबे सेमानकर दा हातुडी के गोटे खुंदा हांडुई दोतला एमाने गोटे 303 राइफल धरथि या भितरे ड्यूरिंग 2000 रो प्रीसीडिंग 10-15 वर्ष भितरे ए फॉलोइंग डेवलपमेंट्स टुक प्लेस सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड मिलियंस ऑफ AK-47 एटी सेठी पड़ीछि एनीबॉडी कैन जस्ट बाय देम पुलिस पे तो वेपन दरकार नहीं भल कथबार्ता कले शांति रे कहले लोकड़ा सुकड़े मानि जिवे ए भले एटीट्यूड तेनो ओडिशा पुलिस नेवर वेपन वाइज डेवलपमेंट कला नहीं एक एक्सप्लोसिव्स मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव जहां पे किसी कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं सब आसी माइनिंग वाला चारियाडे खोलिले हठात आरंभ हो गेला 90s रे चारियाडे माइनिंग खोले तांकरे पड़ला ताकू यूज करी आपण गोटे एक्सप्लोसिव डिवाइस कैन बी मेड which can blast a truck, which can be used for various destructive activities. I remember to teaching our people what to do. I created a bhonga gadi ke dekho udi deya la kenti. Oh my God, इतनी से मैंने कर दो चल, we have to counter to it. 1980 मसीहा कि 90 मसीहा पर्यंत टेक्नोलोजी का पाके नतला केवल पुलिस पाके गोटे VHF जाको जी नै से मॉनिटर करि पाइबो सेति कि थिला आउ का पाके नथिले मेकानिज्म 2000 मसीहा बेलको आपन पारे 10टा मोबाइल फोन हेले गोटा जगह आपन टिया हेले यू कैन फॉर्म ए ग्रुप एंड टॉक टू ईच अदर सेंड मेसेजेस एंड कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंट एक्ट्स आपन बुझले तो जो टेक्नोलॉजी एडवांस करि गला एंड इट इज अवेलेबल टू द टेररिस्ट्स ताकू मैच करिया पे कि जो कैपेसिटी बिल्डअप एटा बहुत दिन जाए हला नाही कि याको बुझिले नहीं यारो इम्प्लीमेंटेशन यारो केमती करिया कहला सो ब्रॉडली दीज आर द रीजंस फॉर नक्सलाइट वायलेंस हला नाउ तापरे व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिड टू face these challenges though it took a little time. I think it's time. Now, को जाय जाइथिली आपन माने थियो मु 90 जाय जाइथिली 90 ना आस्ते आस्ते 90 रु आकु आकु जाय 90s बेले 90s 92 93 94 बेले सेतबेटी सरकार की मीडिया रो व्यू हला जैसे नक्सलाइट माने आंध्र प्रदेश रे जहा ध्वंसात्मक काम करछन ओडिसा को आछन फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन आमे तांग संग लागिले से आम संग लागिले हला ए भलिया व्यू रे तमे तांग संग लागनी तमे खाली जगी की रुह तमर जेति के अछि चलला सेंती एंती हो 97 98 सुधा वायलेंस आरंभ हो गला से हम जो बॉर्डरिंग एरिया जो एएनपीपी थिला जो एंटी नक्सलाइट पीकेस पोस्ट ताकू सेवन आसिकी छड़े की 30 40 बंदूक नै की दीटा रु पळै गले तापर ताकू कमेई देले काढी दियो थिले सेना ताकू ठो नेबे से तो आछन एठी काम किछन एमसो कामिया एमती ही की 2001 मसिया रे सेने कालीमेला आ मोटू दीटा हमर थाना अटैक करी सेठी दीदी प्लाटून फोर्स देले मोटू पड़िला नै किंतु कालीमेला पड़ी गला गोरखा थिले जो हमर बहुत हम मन धारणा गोरखा हम ओडिया लोक माने करो ते गोरखा गुडा बहुत लडुआ जाति बोली ओडिया माने कम तांगर पावर जेमती कि तांको गोरखा ओडिया माने रखिले गोरखा मान बंदूक छड़ी कि नै रे गला ता ये घटना परे टिके टिके एकड़ सेकड़ कोन आरंभ होला फिर 2004 बेलू से माने कोरापुट पुलिस स्टेशन रे पसिकी
ତାଙ୍କ ରିଜର୍ଭ ବସିରୁ ବନ୍ଧୁକ ଫନ୍ଧୁକ ଛଡେଇ ନେଇକି ଗଲେ। କାରଣ ଆମ ଲୋକମାନେ ଜଷ୍ଟ ନଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଟୁ face this kind of challenges or fight this out. ସେଠୁ a beginning was made. ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ a beginning was made. Firstly, you need proper weapons to deal with. Recruit people. କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସାଙ୍କସନ ହେଲା 2004 ପରେ କିଛି ଦିନ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛିଟା କମିଲା। ଫେର 2008ରେ ସେମାନେ ଆସି ସେ ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ ଇଏଫି ଆଟାକ୍ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜମି ଦେଇ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ବାହାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣି ଇଏ କରି ସେ କରି ସେଥିରେ ଗୋଟେ one thing I can tell you as a Odia person, most of you are Odia boys will be working in Odisha government if you succeed. The point is for this kind of problems ଆପଣ ଭାବିବେ ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆଇଡିଆ ଥିଲା ସିଆରପି କୁ ଡାକି ଦିଅ ସେ ମିଲିଟାରୀକୁ ଡାକି ଦିଅ ଏଗୁଡ଼ା ବାଜେ କଥା କହିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଆମ ଯେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି କାଲି ଦେ ନେଇ ବଡ ହୁଇରେ who is born here or ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅଛି if we do not solve our problems ପୃଥିବୀ ସାରା କେହି ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବଳିଆ ଭାଇ ତମ ପିଠରେ ପଡ଼ିବେନି ସରି ଫର ୟୁଜିଂ ଲୁଜ ୱାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ that we have to sort out. Are you getting a point or not? So gradually we created certain posts. One of these in that question is SOG, why it was created and all this. So we have to develop our weaponry, our training, our this and that. It is extremely difficult. Reason being, we do not have a Odisha re gote armed fighting background nahi na achi apan mane कहउछन से को इतिहास रे की का संगे युद्ध करती लेखा हिची बही रे जे किंतु हमर आर्मी फार्मी रे कोन हम ओडिसा रे एमती हरियाणा पंजाब के आ को जगह रे एमती गोटे ट्रेडिशन अछि हमर तो वर्तमान ये रे नाही तो एमती की बहुत दिन स वी हैव टू फेस तो से की ग्रेजुअली बाय के बेहला 2008 पर we really went very strongly. By 2012-13 we are getting better of them. 2014 बेलू we gave them some really heavy casualties along with our counterparts in with our Andhra colleagues. तापरे आस्ते आस्ते छोटो मोटो जिनस हला ए विषय से साउथ ओडिशा टा कंट्रोल हला पर बाय 2013-14 से माने आसी पहुंचले वर्तमान सुधा भी दीटा जाके ओटा होची छत्तीसगढ़ बॉर्डर रे जोटा हमर आपण जानथिबे नुआपड़ा जिल्ला हमर अछि ताकू लाकी गोटा सुनाबेड़ा फॉरेस्ट अछि नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ कोरापुट सुनाबेड़ा सेटा अलगा सेटा गोटा सुनाबेड़ा जंगल सेठी अछि से एरिया रे सेकड़ तांकर गोटा गरिया बंधु जगह अछि छत्तीसगढ़ रे सेकड़ अछि सेकड़ से एरिया टा प्लस कंधमाल रे प्रॉब्लम होछि से कि थिबो कंधमाल रे डोंट होल्ड आई मीन आई एम ए माने कोन न्यूट्रल ऑब्जर्वर टू ऑल दिस ए जो हिंदू क्रिश्चियन गंडोल है कि सेठी कंध पाण कि व्हिच एवर वे यू टेक इट many people there particularly among the minority communities they have a feeling that तांको पे आउ किछि नाही you know am odisha re jenti feeling then they are getting attracted to evela destructive ideologies are you getting a point or not so sethi de kandhamal being what it is particularly kandhamal ru apano गंजाम की नयागढ़ हिली एरिया टा मझिरे जोटा इट इज एन इजी एरिया फॉर देम टू क्रिएट बेसिस एंड ऑल दिस टू एन एक्सटेंट it is being taken care of but still there may be small elements in these two areas of Odisha तापर नॉर्दर्न ओडिशा रे कोन हिची ना हमर जो माइनिंग बेल्ट सिटी आम बॉर्डरिंग एरिया जो बेंगल और झारखंड रे भी माइनिंग एरिया सब अच्छी लॉट ऑफ माइनिंग एरिया सिटी कौन जी आदिवासी डिसलोकेशन इज वेरी हाई ये डिसलोकेशन हला पर आई एक्सप्लेन टू यू द एथनिसिटी रिलेटेड इश्यूज तेणु इट प्रोवाइड्स ए गुड ग्राउंड फॉर दिस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस टू ऑपरेट देयर आपण जेमति जानथिबे गोटे एग्जांपल म आपन दोछि आपण जानछन्ती हमर जो जाजपुर सुकिंदा पाखरे जो हो माने अछन्ती जाजपुर लोक के थिबो हो मानु को कि कोल्हस माने ओरिजिनल ता कोंती हो मानु जदी जानिथिबो दे आर नॉट ओरिजिनल आदिवासी सिटीकार ओरिजिनल आदिवासी हेले मुंडा और महंत से हो माने होचन्ती सेकड़र जो माने इंडस्ट्रियल डिस्टेबलाइजेशन हेकरी
से कड़र कौन जो एरियाटा आम सुंदरगढ़ और मयूरभंज भितर एमती ही जाए ओडिशा मानचित्र जब लक्ष्य करेंगे से एरिया जोटा आम विच्छिन्नांचल बोली आम बड़ पार्टी कहूँ से एरिया लोक से किंतु ए एरिया रे तांकर अब्जर्प्शन मुंडा ये माने महंतो माने they are totally absorbed into local Odia society and टिके absorption रे इशू रोची बोली that is my impression तेणु देख ए also mining activities this could be utilized by some Maoist groups to build a base there माने जो से सुकिंदर फायरिंग हे कि जो बड़ा अवस्था है ताकू भी took us a little time to get this straightened out but some problem still continues there Adivasi mananko bhitere some kind of which needs to be sorted out similarly se je mu kali se area re bordering with Jharkhand but ebe mu sunuchi ebe mane ti kichi din tole barse khonde tole some amount of explosives were stolen from that area it came out in media the apaman those of you might have noticed this and government of India is also quite critical about all this if I remember serves me right so what I was discussing is so far is the technological leap the terrorist element took and it took us time to for instance whatever they are talking monitoring that they might be talking in some Adivasi language taku ye kariki taku bahar kariba ये टेक्नोलॉजिकली किए कुआडे जाउची ताको मॉनिटर करिवा कोठा कोन हेई परिबो so how to handle this there is a unit called special intelligence wing which does this kind of thing and certain other technology we need not go into this they are confidential also so developing that to a certain level takes a lot of time what are science and technology eta mukile technological advancement and taro impact kono on the policy now obviously याको steps कोन नि हाजिबो आ ये करा दिबो तापरे developmental activities because side by side development should take place so that as I was telling you earlier our those who living in those areas particularly Adivasis they feel also that they are a part of the development process what have been done and what are the points to be done गोटे है मु आपन कहली आगु ये जो केबीके प्रोजेक्ट होइछला हमर फॉर आवर मोस्ट जो कोरापुट बलांगीर कलाहांडी पेकी some success has been some success we have achieved in this regard but सेठी केतोडा प्रॉब्लम होतला जेति केतोडा स्कीम अछि जानचंदी आपन गोटे हला पीएमजीएसवाई तार की पीएमजीएसवाई के फुल फॉर्म जानचंदी प्राइम मिनिस्टर कोन हैं कौन पीएमजीएसवाई ना तरीके कौन प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना के धीरे कौन सुनी प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना ता माने जोटा मु आगुरु कहउतली जे से माने कहचंती दीटा कथा गोटे ग्रामर लोक संख्या जदि धरंतु 1000 अछि मोर 800 बुद्धि मोर जहा मन पड़ुची टिके ताहले से गाँ को गोटे सड़क एतिकी पैसा भितर करी हबो बुझिले धरंतु कोरापुट की मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट इंटीरियर रे गोटे गाँर लोक संख्या थी 200-400 से रास्ता हेथिबो 5 माइल बाट आ से रास्ता पहाड़ ऊपर एतिकी पैसा रे हेई पारिबो नाही आपण बुझी परले तो ब्यूरोक्रेसी जेतले गोटे डिसाइड करा हुए सेमन तांको हिसाब रे पैसा केते अछि कोन देई परिबे सेमन हिसाब करंती किंतु ये प्रॉब्लम एमती स्पेसिफिक हेलारु एगुडा को ये हेई पाउ नथिला इट टुक्स इयर्स बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया allowed us to construct these roads बहुत दिन धरी करी नक्सलाइट माने अपोज करथले रोड कंस्ट्रक्शन तार कारण कोन रोड कंस्ट्रक्शन हेले फोर्स जाई परिबे कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हेई परिबो केते मोर बंधु जने एतो मालकानगिरी के जने थिले विश्वनाथ माडी बोली से जने कोया लोक हला तांका संगे मु जाई बहुत समय कथावार्ता हो
से दिना केते माओवादी मान संगे थिले आदिवासी लोक ताका संगे थिले से तापरे माओवादी को छाड़ी से जो एसयूसीआई पार्टी नहीं डीएसओ यार स्टूडेंट हुई से एसयूसीआई पार्टी रे मिसिले आगुरु सही अपोज करथले आमे अपोज करियो रास्ता फास्ता करई दउ नाही किंतु से परे बुझिले जे एटा बाजे कथा ताकू एटा को करिया को पड़िबो ता गोटे रामान्ना बोली अछि सेकड़र से मैंने आसिक गुड़ी करी मारिले कौन ये फैमिली डेस्टिट्यूट होगी बुलूँ से रामान्ना आंध्र जाइए सरेंडर करके गुड़ा टंका पैसा पाइला रिलीफ रिहाबिलिटेशन से सेठी अच्छी एमती केते इश्यू अच्छी माने मोर जे देखिथे बहुत कष्ट कहानी एनीवे से तेणु रास्ता को से बंद कराउथिले माने एभली लोक को प्रोटेक्शन दवा से एरिया रे इट इज डिफिकल्ट आ रास्ता काम करवा जी लोक जीवे जे ये करेंगे रास्ता जो कॉन्ट्रैक्टर माने करंती तांकर किसी प्रॉब्लम नहीं तांको पैसा दे काम कर देबा एटा आज्ञा मोर व्यक्तिगत एक्सपीरियंस थरे से कोरापुट एरिया रास्ता तैयारी हबारे रास्ता कंपनी गोटे बड़ कंपनी नहीं कहला हमको हेल्प आपको हेल्प करू से मते कहले नक्सलाइट हमर प्रॉब्लम नहीं लोकल पॉलिटिशियन माने हमठू जबरदस्ती पैसा आदाय करतन ताकू आपण कंट्रोल करंतु से एरिया एटलीस्ट हम संग लागंतु नहीं एमती नाना प्रकार प्रॉब्लम गोटे रास्ता तैयारी की प्रोटेक्शन देवा को ए एरिया रे ये करे एटा गोटे पीएमजीएसवाई स्कीम रास्ता फास्ता बहुत बर्तमान तैयारी हेई सारलानी तापर यू नो इट हैज इट्स इंपैक्ट ऑन दिस एंड दैट तापर एनआरईजीएस कौन ये जो एम्प्लॉय नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी स्कीम हैं धीरे नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी स्कीम ये जो इटा जो कौन से जो फुल एम्प्लॉयमेंट जोटा दिया है एबे हैं नारेगा जो कौन थे हैं नारेगा कौन ता फुल फॉर्म कौन मुटे बॉयस वाले मने पड़े ओके टाइम लो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बदे मजा मने पड़े अच्छा नाउ से नक्सलाइट एरिया रे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इट कारण से नक्सल माने चांदा मागिवे सेठी जहा कले भी तेम सेठी कौन हुए आमे से निजे रिकमेंड कलु से डिफिकल्ट एरिया जो काम होची किछिटा ए सब न हले छाड़ दिया किछि काम तो हले ही जाऊ आपण मोथा बुझुन से एरिया रे बट नाउ मोरलेस जहा बाहर एठी होची सेतरे बहुत दिन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रे या होनी ता होनी या कले हंता ता कले हंता बहुत कथा आपण सुनिबे किंतु जो डिफरेंशिएटल थला एठा सेठा भितरे सो गवर्नमेंट स्कीम बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एटा गोटा हेलारी गारंटी तापर तृतीय कथा होची एटा सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दीटा का मिसी की से माने मा थाना फाना की जो पुलिस पोस्ट अछि ताको अटैक करथि आपण देखंतु ई जो एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन हरिका एसओजी हरिका कि से बड़ा गोटे जिले में भी रखा एसपी मैंने यूज कर हठात डीवीएफ डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर फोर्स जो मैंने एसओजी को जाती एसओजी डिप्रेशनिस्ट फोर्स मिनिमम समस्त को 35 वर्ष तले होते 30-32 वर्ष पिला जी ट्रेनिंग पाई ट्रेनिंग पाती से कथा जो मैंने जो सीआरपी बीएसएफ की जो मैंने आसुँच हेल्प करने से लंबा चौड़ा है बड़ बड़ होती से माने बंदूक फंदूक ओजन धरिकी या दरकार ता दरकार से माने जंगल भीतर जाई पारिबे नाही आई मीन से माने कहले एटा केने नै आमे बहुत कर दबु या कर से माने उजबा ठीक न मु जो आपन कहली आम जंगल रे आम पिला माने आम आदिवासी पिला माने कि आउ किछि जहा करि पारिबे से माने करि पारिबे नाही आपन एटा एटा होछि मोर व्यू तेनु आम पिला को जो माने ट्रेंड पाइले भलो होई के असंती आमे यूटिलाइज कर भीतर पसी टू डील विथ देम एमान को थाना फाना जगिया पे अपन मो कथा बुझले जे सीआरपी बीएसएफ पर जे आछंती ता पर हथियार पथियार अछि बड़ स्ट्रांग हेछन थाना फाना आ बड़ एस्टैब्लिशमेंट वाला गवर्नमेंट रो ताकू तमे जगह कि रोड को ठीक कर से कामटा हमक छाड़ दियो आमे काम विल डील विथ से माने कोन पारिबे ना एटिका भाषा जानि चंती ना से माने ई करतन से माने हम संगे डील करि परिबे नै तापरे मु कहली जो ये एक्ट हेलानी कोटा कहले पेशा एक्ट हेलानी पेशा एक्ट रे मु आफ्टर मोर रिटायरमेंट परे भी मोर जने बंधु थिले चली गलानी तांको संगे मु जाईकी विभिन्न जगह पेशा एक्ट रो बेनिफिट नवा पे की मु कहली सेठी कोन
ना तुम्हें गवर्नर को लेखिक देले जे आम जंगल जमी आसिकी कंपानी नौ कि ये ना सी कर गवर्नर कैन डायरेक्ट एनीबॉडी अंडर पेसा एक्ट टू प्रोवाइड रिलीफ टू जो माने देइछंती आदिवासी जो माने आदिवासी लोक माने गाँव रे गोटे दरखास्त लिखे भी जानती नहीं केमती गवर्नर को लिखे जोटा आपन कहली आपन गवर्नर को किछ दरखास्त देले से सीधा ताको पठै दे अमुक डिपार्टमेंट के समको डिपार्टमेंट पर एइटारे इट इज स्लाइटली डिफरेंट कारण एटा डिपार्टमेंट इश्यू कोन एटा निजे गवर्नर तांकर ओन राइट कॉन्स्टिट्यूशन 5th शेड्यूल राइट अनुसार करछंती तेणु एइटा केमती प्रॉपर यूटिलाइज हेई पारिबो ताको आमे शिखिया को आदिवासी कि उपांत अंचल लोक मानकु एटा किछि कलु बट ए विषय बहुत किछि करिवार अछि तापरे आ उटे काम आमे करथलु टू हेल्प देम इज ताकु के कोंती साइकोलॉजी और परसेप्शन मैनेजमेंट हैला मु आपन को से जो कहली किछटा नक्सल अफेक्टेड अंचल रे वर्ष वर्ष धरि सेठी पाठशाठ ठीक करी पढ़ाओने कि भाषा ये से भितरे तारतम्य एठा और सेठा भितरे मु आपन कहली सेठी आंध्र एरिया से तेलुगु फेलुगु सेठी आसिकी सॉरी तेलुगु आई हाई रिगार्ड फॉर देम माने जो नक्सलाइट जो माने अब तेलुगु के कोठ के आसिकी से माने हमरो गांधी गांधी महात्मा गांधी कि नेहरू कि आम ओडिशार गोपबंधु हेले कि मधुसूदन हेले तांको ना सुनी नांती पर्यंत किंतु तांको माओ लेनिन लॉन्ग मार्च युद्ध ए सब तांको आदिवासी भाषा ड्रामा फामा करी तांको चलैछन सेठी गोटे धंदा रे याकु काउंटर करिबा बाय सुटेबल मेथड्स आई विल टेल यू टिके मु आपन मन रखिला बेले मु टिके स्टोरी फोरी करी कहूची सी कोन हला ना से एरिया को केमिति आमे ए करिया आमे गोटे स्टोरी करतो डिटेल्स में काटी दोची जे एरो किछिटा बेस भी ट्रुथ तार अछि गोटे आदिवासी पिला समस्त सुनुते रिक्रुटमेंट आरिके बहुत करप्शन होची आपन भाई सुनिथिबे से सब कथा से कोन कंस्ट्रोल रिक्रुटमेंट बागु जाइथला त कोन ताको पाइले नहीं आउ का कोन पेली देले आउ का को देले इत्यादि इत्यादि सुनिला हमर ऑब्जेक्टिव रहला आदिवासी मानन कहिया को जे तुमे एनी डिफिकल्टी फेस करछ यू कम एंड ट्राई टू यूटिलाइज दी व्हाटएवर कारण एटा गोटे बड़ ये रिसर्च करथली विदेश रे से कहले ताकू प्रोजेक्ट करिया को हबो जे किछि आदिवासी लोक दोज हु यूज यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैव बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर डेवलपमेंटल अर्जेस मो कथा आपण बुझि परछन त तेनु एटा सतरे एमती गोटे छोट स्टोरी हेतला जे गोटे आदिवासी पिला ताको रिक्रुटमेंट रे कोन से जाउ नथा ता कोन मना कले ए कले से जबरदस्ती पाठीतुंड करी कि कहला पसिला एंड ही गॉट सिलेक्टेड तापर हाउ ही जॉइंड एसओजी आ ता गा रे कहला एटी के आदिवासी की माने सॉरी माओइस्ट की पुलिस फोर्स केही तम ऊपर अत्याचार करि परबेनी इत्यादि करी कि गोटे ड्रामा में करी कि ताको छडी जाई कि ओई प्रोपागेटेड गुडे लेडी माने सेठी जतले हम इनिशियली पसिलु नक्सल भीतर काहे कि ताको सपोर्ट को जेटा जानी को इच्छा हला पत्र पत्र को साइकोलॉजी एटसेट्रा अधिकांशता देरु एक से आमे तुमे प्रथम कथा बार जो तांको फीलिंग होची आमे हेलु आदिवासी सेति पई कि आमे हेलु गरीब फॉर दैट रीजन सेति पई कि आमे किछ करि परनु सेति पई कि आमे ठकी ही जाउछु दुनिया रे सेति पई कि आम कथा की सुनु नांती हेल मु तुमे तुमे हेलो दिकु और बड़ बाबू तुमे पेंट शर्ट पिंदी स्माइट रे आछो तुमे काम करतो सेठी तुम काम सब ही जाउची तेनु तुमे हेलो एनिमी बुझलो दिस काइंड ऑफ दिस थिंग इज जनरेटेड आउ यार समाधान रो बाटो कोन ना से अन्ना जी अछि जे बंदो धरी बुलुची ताकू समस्त डरुचंती तुमे भी डरुचो माने एनी माने भी ताकू डरुचंती बा झियो माने भी ताकू पसंद करचंती ए बळे आइडिया तांको भितरे साइकोलॉजिकली इवन वी स्टार्टेड दिस इज द वे ए बळे सब डेवलपमेंट तांको भितरे हाउ टू काउंटर दिस to counter this to see that by using legitimate methods somebody has been successful say area say he know that has to he made a hero he is a good person tapar we started semane jo geo pio nei ki tangu destroy kari chanti mu kon कहबी से कथा माने 20 30 वर्ष जियो 20 50 60 वर्ष वाला छडा जंगल भीतर बुली की बंधु बंधु धरी काए नाही पीवा नाही किछि नाही औषध नाही एडसडू खाउचन तांको स्थल पछरे इंटरव्यू कली सेमाने मते कहिले
एठी आम समाज रे किछि बड़ पंडा भुवनेश्वर भी से एबे वर्तमान सुधा बसचंती आज्ञा मु रिटायर्ड लोक जणे मु खाली कहूची आपण माने सुनिबा कथा इमोशनली मु रही परनी 24 घंटा आमे विप्लव करिवु एमाने ठीक करचंती कहूना एठी बसिक दळे लोक प्रति ये रे कहउचंती से जो झियो माने 10 वर्ष 12 वर्ष काम करिके डेस्टिट्यूट होली कि केते मलेनी ता देरु देह खराब हेगी से माने मते पचारले जे सर जेतोळे से माने हमकु मतई करी कामेर पुरुउथिले आपण कोउथिले सरकार ये रे 24 घंटा सरकार को भांगी देबा सरकार किछि करन एमिति करी के हमकु मथेइले नारी मान को आदिवासी मान को बहुत अत्याचार हो जाउची विप्लव न कले समाज किछि ही परिबनी ए सब कहि कि जेतोळे हमकु पुरैले एथरे सब हम आज माने हम जीवन नष्ट हैला सेतोळे आपण कोउठी थिले आपण कथाटा बुझी परछंतु सो दैट इज आल्सो एन इश्यू ए समाज रे बहुत लोग कौन मु कही बड़ बड़ प्रोफेसर माने ये सी गुड़ा लिटरेरी लोक बाजे कथा तांको एनकरेज करछन तुमे जा विप्लव कर देश रे हम या कर दो ताको आगे थेरी हबार अछि मते आपण कहले सब धंदा एउडा को निजो को डिस्ट्रॉय करिया छडा निजो दिहरे निया लगेया छडा तांको देखि हबार अछि मते कहले ए सब करि एटा किंतु तकु हाउ टू कम्युनिकेट वी रिक्वायर एक्सपर्ट्स इन कम्युनिकेशन स्किल आदिवासी मान आम एठी किंतु प्रॉब्लम होची ओडिसा रो अरे मोडा काई कहूची आपण किछ कहि लाभ नाही अधिकांश आम ओडिया लोक धरन से जे अछंती मयूरभंज रे केते जण ओडिया लोक सेठी सांताळ भाषा जानिछन पछाले हार्डली एनीबॉडी कि कंद कुई भाषा की नॉन कुई लोक सो सेठी गोटे गैप होची हम भितरे which needs to be bridged somehow जोटा कि तांकर जो सेंस ऑफ लॉस मु कहली माने तांको निज भाषा न होले मु देखि मु टिके टिके भाषा सब जानि छी बिकॉज़ ऑफ एज ए प्रोफेशनल आई हैव टू लर्न सेटा कहली से भारी खुशी जानती जे तांकर ओडे फेलो फीलिंग दैट जनरेटेड सो ऑल दीज आर मु कहली आपन को अमेलियोरेटिव स्टेप्स टू ओवर टाइम गेट ओवर इट गुडे हमर आदिवासी पिला एथरे पसिलारु टू एन एक्सटेंट वी कुड ब्रिज व्हेन वी आर ऑल आम आदिवासी भाषा स्पीकिंग तो ये होला साइकोलॉजी अपन डिस्क्राइब करले तले आउथरे मु आपन कहूची ये पे की माने सॉल्यूशन आडू जिबा पे की को इशू मु कहली एक रहेला जे ए जो अपग्रेडिंग डेवलपमेंटल इश्यूज रास्ता घाट ये सी डिपेंडिंग ऑन सेठिकार लोकल रिक्वायरमेंट तबे सेठी आउ गोटे कथा मु कहियो चाहूची मोर पावर टू दिस लोकल ग्रुप्स रादर देन मेकिंग इट ए ब्यूरोक्रेटिक थिंग जो सब जिंस दरकार भुवनेश्वर की दिल्ली रे दैट नीड्स टू बी लोकल मान को ये करियो तापरे गवर्नमेंटल ये रो आउ गोटे कथा मु आपन कहूची से सबु जगह रे आजिकली सरकार रे जी अछंती समस्त चाहूछन जे तांका आपण माने भी आमे भी मु भी जे तांका पिला माने गोटा भलो स्कूल पढंतु इंग्लिश मीडियम स्कूल हेताउ से कि सरस्वती शिशु मंदिर मिनिमम डाक्टर खाना थाउ तांकर स्त्री पियांको तांका स्त्री जोडी चाकरी करचंती बहुत करचंती जियो माने आजिकली से भी सेठी थांतु इन सब नाना प्रकार प्रॉब्लम अछि मु थिला बेले सेठी से इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट माने अवस्था के भारी खराब थिला मालकानगिरी हला कि जो नुआ पड़ा हला नुआ जिला उडा कर दे सेठी किछि फैसिलिटी नाही सेतोळे हम तांको सजेशन थिला एठी हमरो कथावार्ता सरकार कर लेवल रे जे एटा बहुत दुष्ट हला एक मालकानगिरी पठै दियो एई भले वे इट वाज ऑपरेटिंग at a time when we require the very best to be in those places if these problems are to be ironed out सेठी के भले बाठरे गुडा दुष्ट लोग सेठी फटाफटी होता ताकू बहुत रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी मान को एमान गातरे काम करियो सेतो टू गेट ओवर इट आई सजेस्टेड किछिटा एक्सेप्ट हला अपन जानथिन से जिल्ला रे जे रहइबो से क्वार्टर रखि परिबो एठी हला बट दिस इज ए वेरी पुअर सरोगेट एटा गोटे बड़ फूड क्वार्टर भर्ती तो हिनी मिलिबनी ताको ये तेनु तार सॉल्यूशन हला आपण देखिबे मु कोरापुट रे देखिली जे सेठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो ये अछि
से जो अच्छी तांकर नालको अच्छी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अच्छी बुझिले तांको पिला मान तांको पे कि माने केते बढ़िया कॉलोनी करछन देखो जाई कि टिके ता देहर तांको जो लोक माने रहउछंती तांक संगे केमती कोन रहिछंती आम गवर्नमेंट सर्वेंट मान अच्छी कि कहले एटलिस्ट डिस्ट्रिक्ट छोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे गोटे जगह जो गवर्नमेंट सर्वेंट मान कि प्रॉपर रहिबार पिला पढ़िबार फैसिलिटी थियो दैट इज रिक्वायर्ड कारण आम सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा दिए ए सब पैसा दिए से माने प्रोजेक्ट भी दे दियंती किंतु लोक रिक्रुटमेंट करियो कि घर पर करियो एटी स्टेट गवर्नमेंट वर्क आपण मो कथाटा बुझी पारले सेठी हमर जो माने ब्लॉक रे अछंती जो माने थाना रे अछंती जो माने तहसील रे अछंती कि फॉरेस्ट रे अछंती ताक पे गोटे कॉलोनी करी सिक्योर करी कि रही पाले दैट बी बेटर ऑब्जेक्टिव तापर केते बडा ब्रॉडर प्रोजेक्ट हम ओडिसा पे मु कहूची जे प्रथम कथा होची हमर गोटे रेलवे लाइन दरकार आपण जदी बंधमाल देखिए बर्तमान तो हो फुलबाड़ी जो खोर्धा बलांगीर रेलवे लाइन हो वर्ष भीतर हो से कंधमाल भितर कलेक्टिंग 4-6 तेरुबाली पहाड़ ऊपर टिके असुविधा हम जो रेलवे लाइन हो जाता आम ओडिशा रु कोरापुट जीवा कहले भी गो भाई आंध्र जानी सो दैट हैज टू बी सेटा सेटा कंट्रोल करहिबो हेले से एरिया गुडा को डेवलप कले आउ गोटे एडवांटेज होची सेठी वर्तमान दरकार मु आउ गोटे कथा देखली आदिवासी जो पिला माने सियाडर सेठी आगे एग्रीकल्चर करिक जे कहउछनी हम डेवलपमेंट करते मते के लागु नै सेठी हेई परियो मु निजे जन लोक मोर 5 एकर जमी अछि कटक सदर रे जो चाष होची आम एरिया रे इरिगेशन ओडिसा रे प्रथम तालदंडा केनाल जे सेठी सुन बाहरची चाष कोन होची न होची भगवान जानंती आपण आधा एकर जमी मालकानगिरी की रायगड़ा गोड़ा पहाड़ ऊपर आदिवासी दे कहे तो हेगला लाइवलीहुड इट डोंट वर्क से मानक एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस नाही किंतु मु सेठी देखिली वेरी क्विकली दे लर्न ब्रिक लेइंग रड बेंडिंग गोटे मोबाइल फोन तैयारी करिया गोटे कार मोटरसाइकिल तांको थोरे सिखै देले किछि दिन भितरे दे बिकम वेरी गुड इन इट तेनो व्हाट वी फर्स्ट रिक्वायर इज गुडे पब्लिक वर्क ए जो रास्ता रेल ये सब हेले दे कैन लर्न एंड गोटे लाइवलीहुड इश्यू लोक संख्या भी बेसी नुहे ए नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया तापर विथ दैट टेक्नोलॉजी वंस दे मास्टर एबे सरकार कोन करछिन ना ताको गुडे जगह ट्रेनिंग ट्रेनिंग करूछन बिना पैसा रे किन ताको पे कि चाकरी नाही सेमेन जाउछन ताको जिल्ला रो बाहरी न जिवे पे कि ताको कि चाकरी नाही कि से व्यवस्था नै सो दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू माने से एरिया रे पब्लिक वर्क like road, railways and other things, substantial amount of public work दरकार जोटा सोटा करूछन सरकार बहुत गुडे रास्ता फास्ता बे सैंक्शन होनी लॉट ऑफ दिस थिंग्स आर डन किंतु से एरिया रे हेले ताको जो एकड़े आसी निज आइडेंटिटी लूज करिवार जो फीलिंग सेटा हे पारियो बोली कि मु भाबुची सो एटा हला एटा गोटा गवर्नमेंट वर्क पे कि एथनिसिटी ये सब कले ग्रेजुअली I think ए जो गुडा को मु कहली आपन को ए गुडा कहले दे कैन डू नाउ आई एम कमिंग टू द इंडियन सीन कारण जी आपन को यूपीएससी देते ए गुडा भी आपन मन रखियो पर इंडियन सीन रे कोन हिची इंडियन सीन रे हमर जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया थिला आंध्र रे व्हाई इट टुक अप सो क्विकली वर्तमान जोटा कोस्टल आंध्र प्रदेश अछि हैला से कोस्टल आंध्र प्रदेश टा वेरी डेवलप्ड एग्रीकल्चरल एरिया तार सरप्लस जोटा हैला एग्रीकल्चरल सरप्लस जोटा हैला तांकर आपण जानथिनी हम ओडिसा रे बहुत दिन जाए जते माछ अंडा कदली जहा एठी हम खाउथुलु ऑल आर मेड इन सेठी आंध्र रो एठी की आस्ट्रा सेठी कार जो सरप्लस हैला ता देर से माने हैदराबाद तयारी करले माने आईटी फाईटी के हैदराबाद कोन हिची आपण देखिछन किंतु तांकर जोटा हैला तेलंगाना एरिया अछि कि ए जो एग्रीकल्चरल कोस्टल पैच सरप्लस तार सेकड़टा थिला टोटाली ए जो तेलंगाना और आंध्र केतोड़ा एरिया आदिवासी फादिवासी एरिया पहाड़ एरिया इरिगेशन किछि नाही सेठी एबे एबे पोलाभरम हे कि दैट एरिया मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड से माने ये करि परिया मालकानगिरी बड़ रहउछ पोलाभरम से एरियाटा किछि नथिला सेठी गोटे गुटी कोया बोली कम्युनिटी अछि गुटी कोया आ बहुत एग्रेसिव ये कम्युनिटी तेनु गोटे मार्क्सिस्ट लाइन रे हैव्स एंड हैव नॉट्स क्लास स्ट्रगल सेठी होतला कारण एकड़ ए जो आंध्र रो एग्रीकल्चरिस्ट कास्ट माने रेड्डी कम्मा कापू ए माने सेठी हेले जो गुटी कोया एटसेट्रा आदिवासी दे आर माने दी हैव नॉट्स ए माने हैव पसी जाउछन
ତେଣୁ ସେଠି ନକ୍ସଲାଇଟ୍ movement was very strong. Violence was much more than what it is in Odisha. ତାପରେ ସେଠି ଏମାନେ ବି both sides are ready say grey hound ଅମୁକ ସମୁକ ସମୁକ ଅମୁକ କରିକି to fight it out because of this kind of interest. ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସେମିତି ସିଚୁଏସନ ନାହିଁ, ଏଠି ହାଭ୍ ନାହାନ୍ତି କି ହାଭ୍ ନଟ୍, ସମସ୍ତେ ହାଭ୍ ନଟ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସିଚୁଏସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କ ହାଭ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବି। 2001 ମସିହାରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ କାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୋଟେ କୋଲନରା ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି ରାୟଗଡ଼ାରେ, ଯଦି କିଏ ଯାଇଛି ସିଆଡ଼େ, ସେଠି ଜଣେ ମାଧବ ଶବର ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ମାଧବ ଶବର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ତା ମା କୁଆଡ଼େ ଆଦିବାସୀ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର 2-3ଟା ରୁମ୍ ଥାଏ। ତଳଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନୁହେଁ, କାନ୍ଥ ଗୁଡାକ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ତଳଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନୁହେଁ। ୟାକୁ ଇଏ ଜଣେ ଘୃଣିତ ଶୋଷକ ବୋଲି ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଫାୟାରିଂ କରି ତାକୁ ମାରିଲେ। ସେ ଫାୟାରିଂ ରେକର୍ଡ କି ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ମଲା। ଏମିତି ସେଠି ଯାଇ ତା ପରଦିନ ବସିକି ଗୁଣ୍ଡ କୋଷର କଣ, ତାର ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି, ତା ପିଲା ଯୋଉମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଳି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ହେଲା ଘୃଣିତ ଶୋଷକ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ପୁରା ଟାଟା ନା ବିର୍ଲା ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ବୋଲି। ସୋ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେନେରେଟ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ଏଠି ଏମିତି କେହି ଘୃଣିତ ଶୋଷକ କି ଶୋଷକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ତେ ଏତେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲଟା ଏଯାଏ ହେଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଡ୍ ୱି ଆଲାଉ ଇଟ୍ ଟୁ ହ୍ୟାପନ୍, ତା ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ ଇଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ କମନ ବେସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ, ଇଏ ସବୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ହଁ, now I will revert to all India level. ତେଣୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ କୋଉଠି ହେଲା, ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର କଥା କହିଲି, ବିକଜ ଅଫ ଦି ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇଜ ସୋ ହାଇ। ସେଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ଏମିତି ଧନୀ ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଗରିବ ଯିଏ ଏମିତି ଗରିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦି ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇଜ ସୋ ହାଇ, ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ ଟୁ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏଗ୍ରେସିଭ ଫିଲିଂସ। ତାପରେ ସେ କୋଉ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା, ମାଲକାନଗିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇଛି ତଳକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏକଟା ହଉଛି ଛତିଶଗଡ଼, ତଳଟା ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଟିକେ ସେକଡୁ ଗଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଦର୍ଭ ଏରିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଛତିଶଗଡ଼ ଯୋଉ ଏରିଆଟା, ଯୋଉ ଜଗଦଲପୁର ଏରିଆଟା, ସେଇଟା କଲଚରାଲି ପେରିଫେରାଲି ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଲୋଜର ରାଦର ଦେନ୍ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିକିଂ ଓପର ଏରିଆ ତାଙ୍କ ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ସେଠିକାର ଯୋଉ ପପୁଲେସନ ଏଟସେଟ୍ରା, ଦେ ଆର୍ କ୍ଲୋଜର ଟୁ ଆମ କୋରାପୁଟ କି ନବରଙ୍ଗପୁର, ଦେନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ସେକଡ ସାଙ୍ଗରେ। ନା ସେଠି କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉମାନେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଲା ପରେ ସେଠିକାର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିକିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ସ୍ପିକିଂ କମନ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦି ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇଜ ଭେରି ହାଇ, କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ ଭେରି ହାଇ, ଯୋଉଟା ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଖରେ ଦିନ କେତେ ସେ ବାହାରିଲେ ଏମାନେ ଏଇ ମାଓଇଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ। ମତେ କେମିତି ଲାଗିଲା, କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ରହିବୁନୁ, ସିଏ ରହିବେ। ୟୁ ଜେନେରେଟ ଏ ଫିଲିଂ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଜାଗା। ସେମିତି ଫିଲିଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଜାଗା, ଆମକୁ वी हैव टू वर्क फॉर इट, वी हैव टू लिव एंड डाई हियर। ସେମିତି ଫିଲିଂ ସେଠି ନାହିଁ। ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ଫର୍ମେସନ ସବୁ ଯାକ ଅଫିସର ହେଇଥିବେ ବାହାର। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସବୁ ଯାକ ଅଫିସର ସିଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମ ପଲିଟିସିଆନ ଇଏ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ପିପୁଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକାର ଅଛୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଅଛି ଆମର ଏଠି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ ଫର୍ମେସନ ଇଜ ୱିକ୍ ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ତ ତାପରେ 2-3ଟା ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ, ସେକଡେ ମରାଠୀ, ଏକଡେ ଓଡ଼ିଆ, ତଳଟା ତେଲୁଗୁ, 2-3ଟା କଲଚରାଲ ଇଏରେ ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଏ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ତାଙ୍କ 2-3ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଡରିଂ ରେ ଅଛି, ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଏ ଇଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫର ଦି ନକ୍ସଲାଇଟ୍ସ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଏଲିମେଣ୍ଟସ। ତାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ପୁରେଇକିରି ତାକୁ ହେଲେ ସମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଣା ହେଇଛି। ସମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ control has been established. Our Union Home Minister has declared that by March end, I mean a mass suda, সেটা মুক্ত নক্সাল মুক্ত হবো কি যা হবো। So this is a good time to start rapid development. সে তো ডেভেলপমেন্ট হেলানি, সে ছত্তিশগড় বহুত ডেভেলপমেন্ট। আমার তো পানি ডিসপুট হয়েছি, you might have heard of it, water dispute মহানদীরে। They are developing very fast, Chhattisgarh. So hope
we will get over this phase for the time being, right? Okay, that's all I have to say. आपन कार किसी पचारिवार अछि कि तापर क्वेश्चन आंसर मोटा न कहया भाबिथिली कारण देखंतु मु जहा देखिली क्वेश्चन मते दैछंती मिस्टर राउतराय you have to answer within 200 to 250 words. Are you getting a point or not? मु या भितरे आपन गुडाय कथा कहली सेटा ओडिसा स्पेसिफिक. It may be all India also. You can more the assessment होछि मे आपन प्रिपरेशन कला बळकु भाबिली आपन केमिति मु काई आपन कासी कहूछि कहले मो ऑब्जेक्टिव होछि आपन केमिति बेसी मार्क पांतु ना ना ये हमर why we are having this discussion in the examination. I am telling you the trick. मोर प्रॉब्लम होछि मु परीक्षा देइथिली केते वर्ष तळे माने 50 वर्ष तळे 51 वर्ष तळे हले तेन वर्तमान जो क्वेश्चन पैटर्न और केमिति मार्क दोसंती I am not very familiar with it, but I can make out how it is. I have been various recruitment UPSC remember kali the staff committee chairman, some idea I have got. आपन जोडा लिखिबे precisely आपन indicate करिवे that you know all the major strands हला ता भितरु यार मु आपन कोटा एग्जांपल मु देखि देबी गोटा कथा मु एमिति करिवे which will give you a this thing that you are thorough on this. I mean, which elevates you above the normal lines. What example मु आपन दउछि भाबी के आस्ते से जो एसओजी प्रश्नटा देखिबी सॉरी सर फास्ट जोडा पढितला एक्चुअली क्वेश्चन हां हां मैं ऑलरेडी लिस्टेड करिछि हां 250 एटा लास्ट ईयर माने एई वर्ष पढितला एबे जो रिसर्च परिपेला एटा डिस्कस द मैंडेट एंड रोल ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस ता ना भूल के पकि दी एसओजी ऑफ ओडिशा पुलिस इन कम्बैटिंग लेक्स टू प्रॉब्लम हैला तापरे मु आपन कहली एसओजी काहे तयारी हेछि. It is a better equipped, better trained Odia manpower. Apan buzile. This Odia is from Odisha. That will hint that he knows that it's Odia people who can fight. Better trained, better equipped in weaponry, communication, motivation, and other. Being from Odisha, you can add that. Being from Odisha, better equipped to handle this kind of situation. And city add korde, most of them are from tribal communities of Odisha. Are you getting a point or not? So this is a better equipped position to handle Maoist or Naxalite violence. It is a unit counter these are small within bracket about 20 or say 30, 20 to 25, 30 teams having a capacity to stay in jungles and conduct operations for days together, right? To take on the Maoist with all these things. And they have been quite successful. Ako mo jemti कहली आपण extend करि परिबे जे एटा आपण कोन एटा आंसर दै छथि आपण नै सर आंसर देइ ना ऑलरेडी दिया है हां तो आपण बुझी परले तो माने तादेर एसओजी जो तयारी हेजी जोथि पई की माने इट इज ए स्पेशलिस्ट एंटी टेररिस्ट फोर्स टू फाइट द armed Maoists in jungle areas of Odisha. Are you getting a point or not? They are equipped with advanced weapons and communication equipments. तापरे आपण लिखिबे जे most of them are young persons within the age 35 hela within the age 35 physically fit and other things trained to stay in jungles for 5 days on basic requirements and that sort of thing. Au seti add karibe also to deal with मुझे आपन कहली सेतल कहली से जो ड्रामा कथा deal with the local Adivasi community in their own language in a human and ये manner city add कर देले जणा पड़ियो जे you know better little better than what others can do. Give you example I would कोन कहली सर एटा एई वर्ष पढितला आईएएस रो मेन क्वेश्चन 2025 Government of India recently stated that left wing extremism will be eliminated by what do you understand by LW and acha LW is a extremist armed Maoist group. Maoist groups going by the name CPI Maoist from last several years, whose objective is to overthrow the constitutionally established government by a classless proletariat
administration. This is what their objective is. Taking advantage of remoteness, jungle areas in the junction of various states. सेटा लिखि देबी को junction रे मु आपन गोटा कहली गोटा हैला आंध्र ओडिशा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एकड़े ऊपरे झारखंड ओडिशा बेंगल बिहार भी लिखि देला हबो ई सब एरिया junctions of various areas to create violence and to to instigate violence and that kind of thing. Government of India during the preceding years have given funds under modernization scheme and other schemes to state police forces to upgrade themselves by creating new modern weapons, communication technology, created also intelligence agencies to handle this, and also the CAPF, particularly the CRPF, BSF, etc., to fight and all this. That happened like deployment of from Central Armed Police Forces, and it's government of India has done, and therefore the violence profile in these areas have come down substantially during preceding years. Violence profile has come down, and by serious developmental initiative, by these developmental initiatives, the local people are gradually, they are being from this destructive Maoist path. So the government of India feels by this problem, this will be sorted out. But it खाली अपन बुझी पाले तो केमती लिखिए टिके टिके ऐड करिवे which make them realize that you know a little better than बही जो मैंने पढ़ी चंती तापिका तापरे कौन Naxalism is a social, economic, and developmental issue manifesting in threat. In this context, discuss the emerging issues, suggest a multi-layered strategy. It I आपन कहि सारिची. आपन did I discuss? It is what it is. Social means I told you that it is a development, governance, ethnicity, technological evolution. All these things I have narrated to you. Can you write it within that 250 words? I suggest you one thing. Apan nije taku 250 words you should answer it within 35-40 minutes. Nije answer kari correct karantu. तापर देखि साला पर सांग को देखांदु सार को देखांदु ए प्रैक्टिस टा करंदु आपण जो सब्जेक्ट थरो होला जाय बिकॉज़ व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट रे आपण बेसी मार्क के पाइबे दैट इज व्हाट यू अच्छा गला आ समझला सर एटा 2018 में लेफ्टिंग एक्सट्रीमिज्म सेटा गला हां तापर कोई नहीं हां एटा सर ओटे लास्ट क्वेश्चन पड़ला persisting drives of the government development large industries in backward areas have resulted in isolating the tribal population and farmers who face multiple displacement. With Malkangiri, it a key booking UPSC with Malkangiri and Naxalbari Fosi discuss the corrective strategy. I will tell you what. Here answer upon the work kon ki. With Malkangiri out here, Malkangiri and Naxalbari Fosi. Malkangiri again industry किछि नाही से को बेसिस रे पकई से इंडस्ट्री रे डेवलप करी रानी आई डोंट नो रियली नक्सल मालकारी कोनटा इंडस्ट्री से आपण तो जानि जंदी कहले मत सेठी दिना केते हेइछला ए जो पत्थर काटी करंतनी कोन ता कहउछंती हैं आगे ए जो घरे पकोनंती पत्थर टाइप सेठी ताको मार्बल तो कहि होबनी ग्रेनाइट कि जहा ताको कहिबो सेठी मालकानगिरी सेठी गोटा मिया अछि से मोटुरे रहउता से मेटल सेठी करथला ए नक्सलाइट करो ये रु से ताको भागी बुई गला आगे एगुडा हैंडल करिया कहउछंती फर्स्ट थिंग इज फॉर एनीथिंग दी लॉलेसनेस एंड वायलेंस इट इज द कंट्रोल न होबो किछि डेवलपमेंट हो मते कहली गोटे एग्जांपल मु आपन दउछि बंशधारा तेलुगु माने कंते बंशधारा तांको से नई कुळे रे दिस इज इन रायगढ़ ना गजपति जिला रे सेठी कोन हिछि ना सरकार जमी तोळा जमी मतलब लागि कि जोटा थाए खाली थिला से
सरकार क्या पाए क्या दिगुंड चारिगुंड एम लेखाए जमी बांटिले आदिवासी मान बांटिले एक तो मुझे आपको कहली चाषर एक्सपीरियंस ना आम जो मैंने 100 वर्ष चाषर एक्सपीरियंस आम भी बाहर को सीटी जाऊँ कौनटा चाषर एक्सपीरियंस अच्छी किसी ना सेठी कौन है आंध्र गोटे एलुइन पेटा बोली जगह अच्छी सेकड़े गुणपुर पाखे जगह सेठी कौन है ना आंध्र जो चाषी मैंने अच्छा भेरी भेरी स्ट्रंग मैंने मुझे देखी एठी आमर ये प्रोजेक्ट है कौटी कलाहांडी से जो नई प्रोजेक्ट है नहीं कौन था ना से नई ना बयस टे बुली हाँ से जो इंद्रावती रिवर प्रोजेक्ट सब जाक तेलुगु आसी कर संबलपुर आमर है से जो हीराकुद प्रोजेक्ट से देश भटली हरिका आप जानते सब जाक तेलुगु मैंने आसी चाष कर ये से एरिया सब बांटिले से तेलुगु रे तांकर केतोडा कम्युनिटी अच्छे लाइक कापू ओडिशा कहते कांपो बोलिकी ब्रह्मपुर अच्छे कांपो मैंने भर ओडिया कांपो तेलुगु कांपो अच्छा कांपो मैंने आ से भाया नेले कहले तुम आमको दियो तुमको आम एकर पिछा 800 ना 900 टका दबू नक्सलाइट आसी कहले गोटा एक्सप्लॉइटर अमुक समूक आम या कर छाड़ी पड़े गले किए कांपो मैंने चाष करते आखु चाष करते से जो वर्ष को 900 टका पाते से जी देते से तक भी गला आप एभलिया डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज आज्ञा ओडिशा रे से जो कहते चाष हेनी चाष तो से हो पारे मुझे आपको कहली किए कर देख कि एनजीओ आमर अच्छा कौन आम से ये कौन से कहते जो सार फार पकाती चाष कर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर से तो धान से कर अवस्था ना तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग शिखेब सॉरी somebody can have a differing view मोर किसी कहबार नहीं ये आज्ञा मत कहीं लगुनि से किसी हो पारे बोल ठीक कहते पैसा पाँच एनजीओ फिजिओ को उठाणी खंडे जमी वर्ष खंडे कले एनजीओ गला सी भी गला ऑर्गेनिक फार्मिंग सरला तेणु से जगह मुझे देखी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहेले जोटा रास्ता फाट रेलवे पेलवे नहेले ये अवस्था त्रुटि मिलना किंतु से कौन होता बहुत लोक लेफ्ट माइंडेड लोक मैंने बहुत लेफ्ट माइंडेड लोक मैंने से मैंने भावुं से एग्रीकल्चर हो या हम ता हम व्हिच डजंट वर्क कारण जो एरिया रे एग्रीकल्चर हम से एरिया एग्रीकल्चर ये जो जंगल फंगल एरिया रे एग्रीकल्चर हवा इज महा डिफिकल्ट पहाड़ फाड़ जो अवस्था है मुझे आप छाड़ बहुत स्टोरी अच्छी केमती बादे कथा मत ही केमती हैरान करती कौन हुए तार अल्टीमेटली से यहीटा मुझे कही रायगड़ा रे सेठी कहती से कड़े बहुत एक्सप्लॉइट कर टंका पैसा देकरी जो कुमुटी मैंने आंध्र कहते कोमाटी नहीं कुमुटी मैंने बेपारी कम्युनिटी आप जानते से निज कलिंग वैश्य बेले कहते कुमुटी मैंने जड़े बाबू थे 12-15 एकर जमी अच्छा ताकू चाष करती हरिजन कास्टर लोक से चलते बहुत जमीबाड़ी अच्छी कौन क्या एक्सप्लॉइट करते मना कर हेनी अच्छा या भितर से कौन कौटी बेपार बेपार करते रायगड़ा कि आंध्रा साइड रे कौन दुकान बजार पिला सब इंजीनियरिंग फिंजीनियर पढ़ी किए कौन चाकरी कर सेठू ये कौन कले ना नक्सलाइट मैंने यहाँ हूँ एक्सप्लॉइटर या जमी के छड़े छड़े ने भी कहीकि लाल पताका मानिक यहाँ नहीं गले से जमी की 25-30 एकर नक्सलाइट मैंने नहीं गले मुझे लक्ष्य कर ओवर इयर्स एम तो चाष जानी ना तेणु से चाष कर पारे जमी जहाँ बाहर कि जीरो गोटे बाहर सेठू इे आसिक से बाबू को पुओ मैंने जी बाहर थे कहले बापा ये जमी की आम पास सागे मसे बिक्री कर आम एठू जीवा जाए टाउन में रही साथ कहीं गंडगोल रही मारी पार छाड़ एमती अवस्था थी लास्ट मुझे देखला बेलू से नक्सलाइट आसिक कहले भाई ना भूल हो गला एथर अत दियो किसी पैसा काढ़ चाष कर फिर भल नहीं आप बुझीपार्टी रियालिटी वे थिंग्स आर गोइंग गोटे संपूर्ण बाजे कथा मोर व्यू अच्छी ओडिशा आमर एग्रीकल्चरल आम लैंड ओडिशा जहाँ लैंड जहाँ अच्छी आमर जमी क्ले सॉइल कहते आम कोस्टल एरिया जमी आ पानी सदाबले आइदर आप देखिए काठुआ जमी ये ये आम इंडस्ट्रियलाइजेशन ना ओडिशार डेभलपमेंट हो पारे फर्चुनेटली आम बहुत अच्छी आयरन कोल अमुक समक अच्छे एग्रीकल्चर लिमिटेशन अच्छी आपन कंपेयर करूँ आम सॉइल विथ यूपी रो सॉइल देखिए धड़ा होमती आम सॉइल एक्सट्रीमली एसिडिक एंड ऑल दिस थिंग एनीवे तो से प्रश्नटा पचारि आपड़ तो अच्छा मुझे कहली कौन एग्रीकल्चर शिखेवा अपेक्षा टेक्नोलोजी शिखेलू मैंने मुझे कहली आप दिस इज माय एक्सपीरियंस से दे आर लर्निंग वेरी क्विकली माने गोटे रोड बेंडिंग घर कि
कि मोबाइल फोन टा तैयारी करिया पे कि कार टा रिपेयर करिया हम एते क्विकली आदिवासी पिला माने सिखि जानती देखिया कथा डिफिकल्टी रही जो गोटे जगह दे आर यूज्ड टू इट एनीवे प्रश्नटा कोन मार्क आपण पाइबे ना ए सब कथा हम डिबेट करि परबे त ए प्रश्नटा कोन थला the persisting drives of development discuss the corrective strategies needed to win away less different corrective strategy को स्फीयर रही करी एक रहेला एजुकेशन सेठी आपण लिखिबे जे एजुकेशन which in a proximate tense माने immediately तार किछ हबा होची to provide them with what with money day to day livelihood करिया पे कि दैनंदिन हेई परियो which can be done upon the if you agree with me agriculture teaching them in agriculture small way is a long term process तेनु ताको से जो population रो teaching them technical trainings and provide them jobs by building public infrastructure एटा ला दुई रे तापरे दुई रहेला नक्सलवादी फोसी is the correct strategy needed to win the left wing extremism doctrine तापरे मु कहली ए जो ethnicity सेठी governance related issues को एमिति improve करेबार अछि that they should feel that their grievances whatever they can be taken care of by the mechanisms prescribed or formed under the constitution आपण बुझि परछन त केमति लेखिया कबो don't try to contradict मु बेले बेले कहला बेले because my experience में तो contradict होची कारण ए जो बेले बेले आसी कि literary people professors जो माने देखि नांती सेठी और आई मीन ताकर practical experience नहीं ताकू तो मु देखि सेठी कहउतली मु तुमरे इसमें contradict होई बही पर लिखा हिची केतोडा मु आइडिया माने लोकन तो फील्ड देखु नांती कोन anyway if you have any questions or otherwise we'll close कार किछ पचारियो को किछ डिटेल बुझिया को किछ हां ताक सर कोन हिची देखो अरेस्ट करे सिपुल बुलथरा धरा पड़ला मु आफ्टर आई रिटायर्ड से अरेस्ट हिची अल्प किछ दिन परे वी आर लुकिंग फॉर हिम सी सब्य सच पण्डा को सेतोळ जेतोळ मुथिल तांग भलो कि चिन्ही दे तांको कथा वार्ता एक्टिविटी ही इज फ्रॉम रणपुर ई पाखरे हैं नयगढ़ नॉट रणपुर इज नॉट इन खोरदा बट इन नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट लागी छी जो हमर चांदपुर लागी पाखरे इमोशनल पर्सन तापर से जहा बुझचंदी से भारी गले दुनिया को बदलया पे जे सेठी आगुटा कथा बोते मु छाडी गले आई वांट टू हाईलाइट द जुडिशियल प्रोसेस से टेररिस्ट एरिया रे एक तो नॉर्मल एरिया रे एठी जुडिशियल प्रोसेस रे काहा को दंड दबा इज वेरी डिफिकल्ट जो बळे आम लोकंकर कैपेसिटी साक्षी दवा को कि जा जो बळे डिमांड करछंती हम कोर्ट माने से ता दे नॉर्मल प्रोसेस रे बहुत कम अछि तम से प्रोसेस रे आहुरी कम तापर मेनली द रिसोर्सेस दरकार बहुत बेसी जे माने ताको करिया पे तापर टेरर तुम धमकी की रखछंती तेणु से नक्सलाइट कर जुडिशियल प्रोसेस इज सब्सटेंशियल माने ऑन द स्पॉट जहा को पहले माइले धलो ये कुछ बड़ा गवर्नमेंट इतला करि परिबनी तेणु द लीगल प्रोसेस हैज टू बी सुटेबली मैनेज्ड पैसा बेसी हेलो हम पैसा बेसी हेलो गुडा से कंधमाल केस रे गुडा लोक को हम कन्विक्शन करि परलु तो लॉट ऑफ मनी हैज टू बी स्पेंट लोक माने आसी साक्षी देबे से लोक को आनिबा ताकू बुझेबा साक्षी दबा इज वेरी डिफिकल्ट कहीं ना अपन गोटे तो कहीं मुझे कह जानी गोटे आप कहले बुझी पारे आमर एठी सत कहले जहाँ बुझाती बुझे सत माने होची हाउ एक्यूरेटली यू डिस्क्राइब रियलिटी यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड लिंग्विस्टिक्स अपन मो कथा बुझिले एले अपन अपन निजर 5 जन को एठी कोन होथिला आसिक आउ थे पचारे से 10 प्रकार कथा कह देखो आमर बिकज ऑफ आवर लिंग्विस्टिक्स सदा बेले गोटे क्वासाई कौन क्वासाई रिलीजियस नाम्बी पाम्बी याडू साडू कथा फटफट आम ट्रेनिंग ये सी विदेश रही इंग्लैंड रे वेरी एक्यूरेट तुम जहाँ कह जी नहीं जहाँ कहला जहाँ कहले आम टीवी फी देखुना आम केमी डिबेट हो जी जहाँ पाला जहाँ पाटे पसला कह कि माने कि कंट्रोल ना जी जहाँ पाटे पसला जहाँ मिछ कथा सब
मिछ कौन माने लाइज और अनट्रुथ मु कहबे ताका इंटेंशन न थाई पारे अच्छा एगुडा कला इंडियन एविडेंस एक्ट अछि ता नारे ये कला वाला इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए कन्विक्शन कारण अच्छा आ गोटे होजी जुडिशियल प्रोसेस रे मु अमेरिका जाइथिली कहीं आपन मु कहूची वाला कला बियॉन्ड यू तांको ये रे सेठी सेठी देखला गो तांकर एवरी डॉक्यूमेंट जो थे गोटे लोक अरेस्ट होची कोर्ट को जाउची से केस इज ड्राफ्टेड बाय एन एडवोकेट मु तो चले अपन एथिक एडवोकेट रखछन what do you mean you are interfering with the liberties of an individual you think anybody can do it amar ठीक ओएसआई को कंस्ट्रोल कोन लिखि दबो के कोन कहला सेटा 10 वर्ष परे कोर्ट रे पड़िबो तेतो साखी कोन कहबो जे भगवान जानंती all these things this governance these are the judiciary is becoming quite powerful so the governance needs lot of improvement including particularly in terrorist affected amar UAPA act यदि आपको टाइम अच्छी यू कैन कंपेयर हम यूएपीए एक्ट गोटे यूएसए रे अच्छी ताको टेररिज्म पे that is also ଗୋଟେ main topic ଆଉ ଗୋଟେ important topic ସବୁଡା question ତ सर जो टेररिज्म ଆଉ तार कॉज कोन हमर स्टेप्स नउचे तो तापर सर ଆଉ ଗୋଟେ टॉपिक करियो इंटरनल चैलेंज इंटरनल सिक्योरिटी को लेके कोन चैलेंजेस होसी ताको सर आ ଗୋଟେ ठीक है सॉरी एनी क्वेश्चन नथिले थैंक यू मैं खाली समराइज करिवे आगे सर एटा करी सर बस सो जो टॉपिक हमर थिला एटा सबु वर्षर गोटे सियोर शॉर्ट क्वेश्चन आपण देखंतु 2000 जो माने ए वर्षर क्वेश्चन थिला 15 मार्कर क्वेश्चन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 2024 रे भी पडिथिला 20 मार्कर क्वेश्चन पडिथिला ओपीएससी रो क्वेश्चन तापरे यूपीएससी एई वर्षर क्वेश्चन थिला जे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कॉज कोन तार ताजगु कोन होउची गवर्नमेंट कोन इनिशिएटिव लेछि एंड जति तमे सर जो क्लास ता करले दैट इज मु कहबी जे एते डिटेल रे एते ग्राउंड रे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नथिले आमे पढिबा कोन ना लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जे डेवलपमेंट हेनी रोड जाइनी सेठी इलेक्ट्रिसिटी नाही एजुकेशन नाही प्राइमरी हेल्थ केयर नाही सर सेगुडा को प्रैक्टिकल एग्जांपल देई कहले जे आमे कहले रोड कोन पई जाइनी सर कहले जे प्रैक्टिकल गोटे रोड जीवा पई 800 लोक दरकार एंड एतिकी गोटे किलोमीटर किंतु गोटे पहाड़ ऊपर 5 किलोमीटर जीवा जोठी 200 लोक रहउछंदी तेनु तांको क्राइटेरिया भीतर आसुनी तो सेटा किंतु आमे गोटे देखिबा क्राइटेरिया ब्यूरोक्रेसी कथा सर कहले एंड एज वेल एज डेवलपमेंट कथा हमें कहबा जो लैक ऑफ डेवलपमेंट रहउची काहे कि हमर ए चैलेंजेस गुडा रहउची सर पूरा प्रैक्टिकल कथा कहले सेकंड कथा हला जे एक रे सेठी हमर जो रहउची इंफ्रास्ट्रक्चर गैप रहउची तापरे एम्प्लॉयमेंट कथा सर कहले जे एमजी नारेगा ए सब कथा गुडा रहउची एम्प्लॉयमेंट इश्यू रहउची गोटे हमर तापरे तांकर जल जंगल जमीन रो इश्यू रहउची जे तांकर जो जागा गुडा को हमें नेई की गोटे डेवलपमेंटल वर्क पई हमें दे दोचे अंबानी की दोचे अडानी की दोचे और वेदांत असला ए सब गुडा के जतल तमे गोटे लोक को ता जागा रु हटेई दोचो से भाबुछन जे बाहर लोक आसी के हमर इंटरफेयर करी की हम जागा गुडा को नेउछन हमर हक ऊपर हमर तो छडे नेउछन जो गुडा को हमें सर कहिले जे हमर रिहैबिलिटेशन रो प्रॉब्लम रहउची और सेमान को डिस्प्लेसमेंट करा जाउची सो सबु जिंस गुडा को सर पूरा डिटेल रे से जिंस गुडा को कहिले एंड आउडे इश्यू हमर रहउची जे एम्प्लॉयमेंट गला इंफ्रास्ट्रक्चर गला लैक ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट रहउची जे बाहर लोकन को सर जो कहले मु आउ तमे जे आमे गरीब लोक आम मन कथा कि केही सुनु नांती तमे बड़ बाबू तमे ड्रेस पिंदी के आसुछ सो ट्रस्ट डेफिसिट गोटे बड़ इश्यू रहउची एंड गोटे हमर आइडेंटिटिकल इश्यू रहउची जे तांकर जो ट्राइबल लोकंकर तांकर गोटे पर्टिकुलर कल्चर अछि लैंग्वेज अछि तांकर गोटे ट्रेडिशन अछि जोटा जेतले बाहर लोक जने जाउ छी त से ट्रेडिशन को से तमे एबे ओएस ऑफिसर हे कि जीवो कि गोटे आईएएस ऑफिसर हे कि जीवो तमे जानि न से लैंग्वेज जानि न तमे तांका प्रॉब्लम केमदी सॉल्व करिवो केमदी बुझिबो सो आइडेंटिकल इश्यू रहउची ट्रस्ट डेफिसिट रहउची रिलीजियस इश्यू रहउची कल्चरल इश्यू रहउची एई सब गुडा को जोगु तांकर से एरिया गुडा का हमर डेवलपमेंट हे पाना पर्टिकुलरली देखिबो को एरिया गुडा का रहउची ना जो गुडा का ट्राइबल एरिया जोठी हमर डेवलपमेंट जेंति हमें कहले मालकानगिरी रे तमे देखो गोटे बिछना अंचल थिला एबे हमर गुरुप्रिया सेतु एबे हेची एयरपोर्ट हमर कनेक्टिविटी नाही तमे देखो बहुत गुडे स्टेट को माने एरिया को जोठी कि हमर रेलवे लाइन जाइनी कंधमाल कथा सर हमर कहउतले कि रेलवे लाइन एबे हमर रहउची तो इंफ्रास्ट्रक्चर रा प्रॉब्लम रहउची एंड ता पई कोन गवर्नमेंट करूची जे ता पई हमर डेवलपमेंटल काम करूची जेमति कि हमें कहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एबे तांको एम्प्लॉयमेंट दिया जाउची
ट्रेनिंग दिया गोटे नई रोशनी स्कीम आसी जो ट्रेनिंग दिया कि एम्प्लॉयमेंट दिया तुम गोटे एबे नुआ स्कीम आसी पीएम जनमन जो जनजाति जो मैंने एरिया रहिले 63,500 ग्राम अच्छी से एजुकेशन हेल्थ ओवरऑल डेवलपमेंट कथा कह एंड एटा हूँ सॉफ्ट अप्रोच गोटे डेवलपमेंट करवा एंड हार्ड अप्रोच कौन जो मैंने कि निहाती गालुआ लोक रहिले जेमती कि बिल्कुल तमे जहाँ भी करदेले से मैंने चाहूछंती जे लोक मानकू हमर माइंड वाश करी सार जेमती कहले जे एई कॉमन लोक माने जेतेबेले देखुछन जे गवर्नमेंट आम कथा सुनुनी तो आम कथा आउ जने आसिक तुमको मोटिवेट करूची और तुमको लोभ देखुची तमे आम संगे मिस आमे तुमको जॉब देबू तुमको चाकरी देबू और तुमको तमर डेवलपमेंटल काम रे आमे हेल्प करू तांको माइंड वाश करी कि तांको ट्रेनिंग नै कि गवर्नमेंट अगेंस्ट रे लढौछंती तेणु से कौन हार्ड अप्रोच जमी कहले मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंस सिस्टम को आमे माने मॉडर्नाइज माने मॉडर्न इक्विपमेंट रखिबा और हमर गोटे ऑपरेशन ग्रे हाउंट अछि ओके तो सेइडा एंड सार जोटा लास्ट को हमर कहले जे हमर गोटे एबे प्रोग्राम चलची गोटा होची ऑपरेशन समाधान गोटे स्ट्रेटजी होची कोन ना समाधान जोटा हमर डॉक्ट्रिन जो रहिला तो समाधान डॉक्ट्रिन जोटा सार पूरा डिटेल ले कहले समाधान डॉक्ट्रिन ने स्मार्ट लीडरशिप हमर रहला किंबा एग्रेसिव स्ट्रेटजी रहिबा दरकार मोटिवेशन ट्रेनिंग जेमति कि ट्राइबल पीपल मानन को ट्रेन करके सो दैट तांको एम्प्लॉयमेंट दियो सो दैट से माने रहिबे एक्शनेबल इंटेलिजेंस डैशबोर्ड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी कथा हमें कहले सर जेमति कहले जे तांको टेक्नोलॉजिकल हमें स्ट्रांग जदी करिबा जे जणे जण को सिखे दबा कि केमति हमरो मोटर तयारी होची और गाड़ी ए सब काम गुडा कहूची तो से माने सेइथरे एम्प्लॉयमेंट जेमति कि जो पहाड़ एरिया रे एग्रीकल्चर हेई परिबनी इरिगेशन नाही तो तांको हमें अल्टरनेटिव सोर्स देखैबा जेमति कि हमर कहले हमें ट्रेनिंग दबा जोडा कि हमर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग हमें दबा से माने को सो एई सब गुडा का आन केमिति तांकर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर हमें जो कहले जे तांको प्रॉब्लम गुडा का तांकरी लोक गोटे थिएटर फॉर्म रे हम देखियो सर गोटे क्लासिक एग्जांपल देले जने ट्राइबल पिलां को प्रथम रिक्रूटमेंट करा गला एंड तांकर थ्रो रे मेसेज ता दिया तेणु यही सब गुडा का हमें कले जोडा रहबा एंड दिस इज ए टॉपिक जोडा कि यूपीएससी रे हो एंड एबे हमर जने पिला जाई इंटरव्यू दबा को एंड सर ऑलरेडी तांकर इंटरव्यू नै थिले 2-3 दिन पर रिजल्ट बाहरिबो वी आर पॉजिटिव होपली से पाई जिवे ए क्वेश्चन सर जोडा पचार थिले अपन सर से पिला को एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पचरा गला कि ओडिसा रे नक्सल गोटे बड़ इश्यू रहउची तो ता पई नक्सल को केमिदी हमें टैकल करबा ता पई कोन गवर्नमेंट एक्शन नेइची तो ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल सर कहले यू कैन नॉट गेट एनी बुक वो बुक रे भी हम पाई परिबनी एब्रा जोडा का पूरा डिटेल रे हमें डिस्कशन कले इट इज ए टॉपिक जोडा तमरा प्रीलिम रे हेल्प करिवो मेन रे मु देखिली तमरा ओएस रे आ आईएस रे सबुथरे ई क्वेश्चन पढुची प्रति वर्ष रे एटा गोटे 15-20 मार्क्स रो क्वेश्चन प्लस इंटरव्यू रे एटा गोटे श्योर शॉट इंटरव्यू रो क्वेश्चन जोडा कि आईएस हो ओएस हो डेफिनेटली क्वेश्चन तुमको पचरा होची सो थैंक यू सो मच सर जोते एते डिटेल रे डिस्कशन कले एंड हमें प्रैक्टिकली जानि पारले जे कथा सर ऑलरेडी एई फील्ड रे ऑलरेडी काम करी छंदी लोकन सारे मिसी छंदी जण जनकर ना क्लासिक हमें देउ जो गुडे बुझिया पई हमें एते माइन्यूट डिटेल रे केबे को बहिरे जानि परिबनी तो माने से सस टाइप ऑफ ग्रेट सेशन जोडे कि हमें फ्यूचर रे करिबा सर ऑलरेडी माने इंटरनल सिक्योरिटी आ टेररिस्ट पई तांको डायरेक्शन में भी काम होची आ गोटे सेशन जोडे कि मेन टॉपिक एंड सबले परीक्षा रे पडुची सो आर आंसर तो तुमको देखिबो जो मॉडल आंसर रे दिया जाईची तो सेटा पढिबो किंतु तार बैकग्राउंड बुझिबा पई तो जोडा कि हमें कोन काहे कि एमदी होउची तो से सब जिंस को बुझिया पई जने प्रैक्टिकल जे ग्राउंड लेवल रे जड़ित तो है कि काम करिथिबो से ही कहि परिबो नॉट मी कि हमें को बहिरु हमें तो बहिरु पढ़ी कि तुमको कहि किंतु प्रैक्टिकल कथा नो वन विल टेल कि ग्राउंड रे कोन चलीची एडी जेमती सर कहले जे ब्यूरोक्रेटिक एडी बसी पॉलिसी तयारी कले सेठी लोकंकर कोन प्रॉब्लम होची से जानिबेनी तेनु ए सब गुडा को हमरो निहाती जानिबा दरकार एंड थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन तो हमें फ्यूचर रे जाई के आहुरी ए भले हमें सेशन करी थैंक यू एवरीवन ओके सो थैंक यू एवरीवन ऑनलाइन रे जो माने अच्छा कार किसी डाउट अछि or should we wrap up the class? Go. Thank you that
northeast side, they are being funded by the China as a proxy. They are used. Getting the counters, they are funded by proxy. What side is our side? Our side, we are the only one here that we are on side because that Andhra Pradesh side was used by LDT. But sir, what the steps should be taken that these are idols should be stayed down. And most probably that now recently something about Hitman death. Hitman death. They have properly Hitman death as a doing party. So that have to be eradicated that idolatry. And what's the steps should be taken that these idolatry should not be thrown away later. Okay. So sir सेटा कहबे किंतु मु जस्ट कहि दोछि तुमको नॉर्थ ईस्ट रो इश्यू डिफरेंट हमें जोटा पढिबा नक्सल एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और हमें एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हमें जो कहबा नॉर्थ ईस्ट एरिया रो तांकर डिफरेंट इश्यू अछि तो हमें जेमति कहबा बोडो पीपल रहले हमरो सेपडे हमर नागा पीपल रहले तांकर इश्यू अलग रहउछि साउथ रे तमे जो कथा कहछ जो जम्मू एंड काश्मीर तांकर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहउछंती तो दे आर नॉट पर्टिकुलरली नक्सलिज्म हमें टेररिज्म आडको से सो ए सब गुडा का हमें पढिबा इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम को एरिया रे रहउछि एमति ओडिसा रे हमें कहले नक्सल गोटे इश्यू रहिला नॉर्थ ईस्ट रे कोन रहउछि जम्मू एंड काश्मीर रे कोन रहउछि साउथ रे कोन रहउछि हमें सेपरेट सेति पे आउ गोटे पार्ट आर रहउछि जे इंटरनल सिक्योरिटी जे हम इंडिया भीतर जो डिफरेंट रीजन अछि आउ कोन कोन सिक्योरिटी प्रॉब्लम रहउछि तो ताकू हमें आउ गोटे नेक्स्ट क्लास रे सर करियो से सर कहउछंदी जे हमर ओडिसा रे जो भलिया नक्सलिज्म रहउछि तो नॉर्थ ईस्ट रे भी हमर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहउछंती एंड साउथ रे भी जेम जे हमें कहले एलटीटी हमर रहउछंती जो श्रीलंका रे रहउछंती किंतु साउथ रो जो तमरो बिरापान कथा कहउछंती से माने सो इंटरनल सिक्योरिटी हमें देखिबा अन्य जो चैलेंज गुडा को कोन अछि नेक्स्ट क्लास रे ओके सो ठीक अछि थैंक यू एवरीवन Thank you, sir. Thank you, sir.